Hello friends, Namaskar दोस्तों, good morning. Today is 27th of February 2024 और आज एक ट्रेडिंग ओपन डे है। ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ। आई एम पर्सनली अ forex and commodity trader and also I trade in stocks. I'm a specialist in multi-asset trading, bonds, different asset class, and also global markets, global macro. I don't personally look at stocks fundamental, individual fundamental. I prefer to look at global macro. So these are my specialization. I'm associated with Elan Markets. वहां पे मेरा दो कोर्स है, एक आपको ये ग्लोबल मार्केट्स का नॉलेज शेयरिंग करता है एंड द सेकंड वन इट डायरेक्टली गिव्स यू एक्सेस टू माय ट्रेडिंग सेटअप. सो इसमें टू हेल्प आउट द दोज हु यूज माय ट्रेडिंग सेटअप, उनको गाइड करने के लिए आई पोस्ट दिस वीडियो. इसमें आपको भी हेल्प कर रहा है, देन दैट्स ग्रेट. इट्स लार्जली फॉर दोज हु आर यूजर्स और दोज फॉर मी, ताकि मैं पीछे जाके देख सकूं. काइंड ऑफ ट्रेडिंग लॉग के तरह सोच सकते हैं. तो इसमें पहले जो हम लोग करते हैं और हर ट्रेडर को करना चाहिए, इफ यू आर इनटू फॉरेक्स एंड कमोडिटी, दिस डेटास आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे पता है कि व्हाट डेटा है. आई वी नो, अब आप और मैं, हम लोग, आप अगर जुड़े हुए हैं, आप और मैं एक साथ देखे हैं वीकेंड में क्या डेटा आने वाला है. बट स्टिल दिस इज एन एवरीडे हैबिट. Every day you look at it, this is inflation rate core and this is the actual, both have come down. This is not a very positive news for Japanese yen. Japanese yen में आने वाले टाइम में, मतलब just it's a morning session, European session, American session, Japanese yen can remain under pressure. The overall inflation comes down, means central bank will be in less hurry to raise rates. So here durable goods order, this will add to some dollar based volatility, but other than that we have Fed, Barr and Smith. They will be Fed speakers, but not major market moving data. So broadly we'll have to rely more on our technical setup, and we will know two events. One as past inflation data, which will, I think, will have more impact in the coming days and weeks. And this is more of a short term impact जो इवनिंग को दिखेगा with the durable goods order. A positive durable goods order, growth in durable goods order, interest rate and dollar, ये दो पॉजिटिव होंगे. और ओवरऑल इट विल बी नेगेटिव फॉर commodities, gold, silver, and equities may also feel pressure. Higher durable goods order is positive for equities, whereas higher interest rate is negative for equity. So depends कैसे bond market react करेगा, depends on that way equity market will also react. So this is our Tuesday data agenda. इसके साथ साथ और एक हैबिट आप डालिएगा कि रेगुलर एक इंटरनेशनल न्यूज को देख ले. China stocks rise in cautious trade. This is not a view. Hong Kong shares drop. This is an information drop in third session which was weak. हम लोग थोड़ा हांगकांग में पोजीशन है, मींस चाइना, नॉट हांगकांग, चाइना में पोजीशन है. ऑब्वियसली हम लोग इंटरेस्टेड हैं चाइना में क्या हो रहा है. US 10-year bond yield drops 2 basis points. Dollar negative news. Oil holds recent gains. हम लोग बात ही कर रहे थे बुलिश के, बट ऑयल हमें निकाल दिया अपने पोजीशन से. हम लोग फिर से एंट्री करने की कोशिश करेंगे. स्टॉक्स इन जापान हिट ऑल टाइम हाई. इसके बारे में जो लोग मेरे क्लास किए हैं, यू नो, आई टॉक्ड अबाउट दिस, कि ये बात होगा मार्केट में कि जापान विल बिकम फोकस, ऑल टाइम हाई ब्रेक. एंड नेचुरली दिस इज वेरी नेचुरल. हम लोग का कई सारे लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है, दिस आर इन चैलेंज. लाइक यूएस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट 30-year बॉन्ड जो हम लोग देखे हैं, देयर ट्रेंड लाइन ब्रोकन. Similarly, 40-year long, that Japanese yen range bound market has broken. This will add more fuel to the equity rally. And the cycle continue to get stretched. This cycle is looking to be very interesting and different from the previous cycles जो I have studied. Cycle means economy goes through a cycle, recessionary cycle के through जाता है. Boom and bust, तो ये boom bust cycle की बात कर रहा हूँ. सो ये साइकिल जो है, हम लोग एक बास्ट के पास में, ऑलमोस्ट एक रिसेशनरी साइकिल में हम लोग, जिसका नेक्स्ट जो लेग है दैट इज अ क्रैश लेग. बट वी आर नॉट देयर येट. अभी तक पहुंचे नहीं कि वो क्रैश मोमेंट पे. इफ यू वॉच माय वीडियोस, आई थिंक वी विल कैच इट लाइव टुगेदर.
but it is there. It is underlying there. The risk is there. So this euphoria mood, it is continuing. It is an awesome euphoria rally. I think further stocks are जो bullish दिखाई रहे will remain bullish. So overall the news are done. Overall 5, 6, 7 news are done. अब हम लोग आ जाएंगे हमारे ट्रेडिंग सेटअप में. उसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे बॉन्ड मार्केट को. बॉन्ड मार्केट से करेंसी वाले को बॉन्ड मार्केट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बॉन्ड मार्केट से क्या क्यों मिल रहा है, उसके लिए मैं ट्रेडिंग सेटअप में फर्स्ट ऑफ ऑल डेली चार्ट यूज करूंगा और मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड जो सेटअप इस्तेमाल कर रहा हूं इसमें मैं मदर सेटअप फाउंटेन ऑफ गोल्ड का इस्तेमाल करूंगा. I'll use that. So I need SD Rainbow Wave version 1 and SD RSI X. For that हम लोग चालू करेंगे 1-2 year के आसपास से. So it is 1 year interest rate is going up a bit. ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा because it is linked to Federal Reserve. Fed का rate anyway is not above 5.5. तो ज्यादा रूम है नहीं. SHY में अगर कोई ट्रेड लिए हैं you could be in loss. Don't worry about it. This rate moves with the Federal Reserve. Federal Reserve जैसे ही कट करेगा, which is the next very likely move, this will interest rate will go down and the bonds that you've invested will go up. But long-term bonds are more for gains than the short-term bonds. So SHY will anyway will not give that awesome of a gain. लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स भी हम लोग देखेंगे बट उससे दिस इज कॉल्ड द फ्रंट एंड ऑफ द कार्व. इसको फ्रंट एंड ऑफ द कार्व बोलते हैं. यील्ड कार्व. जिनको यील्ड कार्व के बारे में पता नहीं, यू कैन रीड अबाउट, यू कैन स्टडी अबाउट यील्ड कार्व इन माय सेपरेट सीरीज जो है. हर कार्व कुछ कहता है. तो ये 2 ईयर इंटरेस्ट रेट हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं. स्टेडीली गोइंग अप. दिस इज ओवरऑल डॉलर पॉजिटिव और एटलीस्ट जापानीज येन नेगेटिव. This is more of a belly of the curve. Belly of the curve momentum is coming down. The candle is much smaller. Belly of the curve is not so interest rate bullish, and this is the tail of the curve or longer end of the curve बोलते हैं. It's too squeezed. एक correction हुआ है, so this is dollar negative. Long term bonds are a bit dollar negative. Short term bonds are a bit dollar positive. और overall का स्प्रेड भी चेक करना पड़ेगा. US02Y माइनस DE02Y. बेसिकली इसमें मैं यूएस इंटरेस्ट रेट एंड जर्मन इंटरेस्ट रेट का कंपैरिजन कर रहा हूं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यूरो डॉलर. सो जर्मन यूएस इंटरेस्ट रेट पहले है, सो दिस इज रेड मींस नॉट सो गुड. फॉर द यूएस rate means US dollar के लिए not so good, but at the same time it is likely within our range. So ये जो spread है, interest rate spread से we are not getting much, definitely not to dollar bullish जो normal सिर्फ कर्व से दिख रहा है. So it's more of a mixed market situation from the bond point of view. इसके साथ हम लोग देखेंगे GB02Y minus US02Y. So this is falling. This is the interest rate has not been very pound positive. Pound में थोड़ा बहुत bullish का signal आ रहा है. मैं bullish भी हूँ. But interest rate का support जितना दिख रहा है कि overall है नहीं in the interest rate. It's actually pound negative level पे है interest rate. So this one I will keep in mind जब मैं position size बिठा रहा हूँ. With this I'll come to currency market. अब finally आ जाएंगे. Currency market में dollar index not so hot. Clearly दिख रहा है कि momentum in the dollar is bearish. और इसके लिए अब मैं forex currency वाला सेटअप का इस्तेमाल करूंगा. It is red candle, red background. कल जब हम लोग Sunday review कर रहे थे, it was more of a here which was neutral, but now with red background, dollar can decline further. But look at the candle size. ये denote कर रहा है that we can see both side high volatility. Both side volatility दिख सकता है. So ज्यादा quantity dollar short ना करके we will prefer smaller quantity because these are level of initial targets.
So this will be more of a, even if dollar falls, it will, rather than bearish, it will be more of a bearish range sort of a situation. तो इसको कैसे खेलेंगे? यूरो यूएसडी इज वन. यूरो डॉलर में इनिशियल एग्जिट का जो हम लोग बात किए थे, दिस वाज द एग्जिट. आफ्टर ये दैट यस्टरडे इट वाज एन इनिशियल, और एक फोमो का एंट्री का अपॉर्चुनिटी था. दिस वाज कैंडल, एक नया हाई बनाया, बट फोमो क्यों? बिकॉज फर्स्ट स्टार्ट वी ऑलवेज स्टार्ट एज अ फोमो क्वांटिटी, छोटा क्वांटिटी. एंड एज कैंडल साइज जो है दोनों नीचे के साइड भी बढ़ रहा है, मतलब वी कैन सी बोथ साइड वोलेटिलिटी. बट ओवरऑल कैंडल का साइज जो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मैक्स स्टॉप लॉस इज गोइंग डाउन. दिस इज पॉजिटिव बिकॉज दैट मीन्स बुल्स आर नॉट डन. ये नीचे जाके ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहा है. एंड वेरी लाइकली वी आर गोइंग टू सी सम मोर अप मूव, लाइकली टुवर्ड्स 1.09, जो अभी भी 50 पिप्स दूर है. एंड वी कैन गो फॉर अ टेस्ट ऑफ 1.0934, 1.0917. ये जो एरिया है, दिस इज वेरी कंजेशन, और ये अब सपोर्ट बन चुका है. ये जो फ्लैट लाइन है ऑरेंज लाइन में, दिस इज नाउ अ सपोर्ट, एंड these are my target areas. आज possibly I can increase some more quantity. ये 125 मिनट मैं बाई करूंगा, ये क्लियर हो गया. तो फाइन ट्यून करने के लिए, एंट्री बेस्ट करने के लिए, I use the 125 minutes chart. 125 minutes chart ओवरऑल पॉजिटिव एंट्री का बात कर रहा है. बट मैं 11:30 से पहले पोजीशन या 12 से पहले पोजीशन लेना पसंद नहीं करता, बिकॉज आई वांट यूरोपियन मार्केट टू स्टार्ट ओपनिंग एंड गिविंग मी सम फील ऑफ थिंग्स आर कैसे एट द एंड ऑफ द जापान सेशन मैं देखना चाहूंगा. मॉर्निंग सेशन इज टोक्यो सेशन. So यहाँ पे once Tokyo session is over, if it's bullish, I like can go for and buy entry, and further above this 1.0864, I will go for further entry and see how it goes. GBP USD, I was not so happy with my position on the weekend. I was bullish. आप जो लोग मेरा weekend में position देखें, you know that I'm bullish. But I was not very happy because this was below the closing, was almost बहुत पास था 0.664. कैंडल दोनों साइड कल ही बढ़ रहा था, जो दिखा रहा था बोथ साइड वोलेटिलिटी हो सकता है, जो हो भी रहा है. लॉट ऑफ स्पाइक्स. ये रहा, मैं अलर्ट भी डाल के रखा हूं. बट ओवरऑल रेट सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर. दिस इज गुड. इट कैन बी ए मोर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी. अब मैं पोजीशन इंक्रीज नहीं करूंगा. आई विल होल्ड माई पोजीशन. And I would love further break up to add more position. This is still within a congestion period. उतना conviction नहीं आ रहा है ट्रेड में. एक ट्रेड जो ऑन है, अभी तक ज्यादा पैसा दिया नहीं है, बट इट इज होल्डिंग अप. ओवरऑल जो ये जो आज का जो स्कैंडल है वो स्क्वीज हो चुका है. हो सके अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए. स्टॉप लॉस एट स्क्वीज, मे बी वी कैन सी सम रिवर्सल. सो रिवर्सल के लिए जो चाहिए, दैट इज द इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन इज नॉट रियली मतलब not really very Japanese yen positive. Unka inflation is also not very positive, but technical setup is suggesting that I squeeze my stop and I prefer to go with my timing tool. As agar galat bhi ho gaye to we can enter again. We will be able to enter once again. We will be able to enter at the break, but as the candle has squeezed, ये बोल रहा है कि stop loss छोटा करने के लिए बहुत. So I'll bring the stop around 150.31, which we will be able to make some money even if stop is hit. तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूं, this is Euro INR. बुलिश हो रहा है, एम्प्टी लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है व्हाइट क्रॉस. यहाँ पे मैंने अभी तक पोजीशन नहीं लिया था. कल जब कैंडल बन रहा था, इट वाज स्टिल व्हाइट क्रॉस वाज नॉट अबव. सो लेटर ऑन हमारे क्लोजिंग के बाद वो अबव हुआ, और बाद में आज वो सस्टेन कर रहा है. एक वार्निंग मुझे कैंडल दे रहा है दैट यू माइट सी सम जिगजैग, क्योंकि कैंडल नीचे की तरफ बढ़ के मैक्सिमम स्टॉप लॉस को नीचे पुश किया है. तो इसका मतलब ये वी कैन सी बोथ साइड जिगजैग. दैट्स नेचुरल, क्योंकि पहले ये कॉन्ट्रा ट्रेड है बाई,
क्योंकि ये मेन ट्रेंड के अगेंस्ट है और कई सारे लेवल्स है, बट इसमें मैं बाई करना पसंद करूंगा। और बाई के लिए मैं 125 मिनट्स में अपना फाइन ट्यून करूंगा पोजीशन। पहले आई विल वेट फॉर द टाइम एंड सिमिलरली दिस ब्रेक 90 के ऊपर और इस लेवल के ऊपर जब सस्टेन करेगा, विच इज ऑलरेडी 7 पैसा दूर है, तो ये 90 के ऊपर जब क्रॉस करने लगेगा, दैट इज वेयर आई विल स्टार्ट बिल्डिंग पोजीशन। और या फिर इसके ऊपर क्रॉस नहीं हुआ बट अभी अब मैं एंट्री कर सकता हूं, यस, एज पर माई रूल, बट आई वेट फॉर यूरोपियन आवर्स। तो यूरोपियन आवर्स में अगर ऐसा ही चल रहा है, ये देखिए अलर्ट आ चुका है, मेरा ऑल ट्रेड्स आर बेस्ड ऑन अलर्ट्स एंड सिग्नल्स, सो आई विल कम टू इट। सो पहले जंप करके मैं कोई ट्रेड नहीं करता इनिशियल मॉर्निंग आवर्स में। सो दिस इज एनीवे मूविंग अप, this is overall green candle, so we can enter, but I will wait for 12:30. If I see this movement is fine, then I will go for a FOMO entry, or else I will wait for this level break. मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा this will be the stop loss 89.78, इसके नीचे क्लोज हो जाए, that will be a major warning for me. फिर हम लोग आ रहे हैं जीबीपी आईएनआर में। जीबीपी आईएनआर मैंने बोला था आई वाज नॉट रेडी टू बाई, जीबीपी यूएसडी बेटर था बिकॉज जीबीपी आईएनआर में अभी भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू एंटर। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, बैकग्राउंड अभी हुआ नहीं है, इट्स मोर येलो। क्या एंट्री कर सकते हैं? यस, बिकॉज रेनबो का जो मिनिमम, मेरे सेटअप का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, एक फुल ग्रीन कैंडल विथ एसटी मोमो, वो फुलफिल हुआ है। बट क्या मैं एंटर कर रहा हूं? नहीं, मैं आई प्रेफर हैव टू हैव मोर क्लैरिटी। यहाँ पे इमीडिएटली फोमो क्वांटिटी करने का मुझे बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है, because I'm already long in GBP USD, so GBP USD anyway going to give me profit if GBP goes up, and INR थोड़ा strong रहा है, तो GBP USD looks like to me a better trade right now than GBP INR. JPY INR, JPY INR has reached a candle squeeze हो रहा है धीरे धीरे। JPY INR जो एग्जिट नहीं हुआ है, आई हैव एग्जिटेड मेजॉरिटी क्वांटिटी, कैंडल स्क्वीज होके स्टॉप लॉस नीचे ला रहा है, स्टॉप लॉस काफी नीचे आ चुका है, ऑलमोस्ट 20 पैसा दूर है, सो देयर कैन बी रिवर्सल। इसमें मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, लुक एट द डाइवर्जेंस, there is some divergence happening. The candle, the cloud made a bottom at this level, a bounce back, and then steady sell off. So really it is not a strong down move, but a gradual down and consolidation हो रहा है यहाँ पे। So JPY से निकलना या मैक्सिमम स्टॉप लगाना, ये मेरा स्ट्रेटेजी होगा। मैक्सिमम स्टॉप ऑलरेडी काफी पास आ चुका है, दिस कुड बी अ वार्निंग दैट वी वंस अगेन may see a reversal like here. ऐसे अगर मूव हुआ, मैं फिर से बाई करके पैसा कमाने की कोशिश करूंगा, बट इसमें मस्त रन मिला है, so it is time to get out partially, at least 50-60% of my position is gone. Now rest of the position obviously max stop loss है, और बाई के लिए मार्केट इज नॉट रेडी, वी मे सी अ ब्रेकडाउन, अगर ब्रेकडाउन हुआ फिर से बेच देंगे, कोई इशू नहीं है। I will go with my setup. It is a very profitable one, so no point to breach my friend. जिंक ऊपर जा रहा है, दिस इज, हम लोग पहले ही बात किए थे कि जिंक में अपॉर्चुनिटी आ सकता है। USD INR has been a rangish pair. I don't like it much, but it can go down if this level breaks stably 82.80. It can drop towards 82.5. Can we jump now? No, there is a green socks, मतलब tough fight between bull and bear. तो अभी वेट करना ही बेहतर होगा, एटलीस्ट जो USD INR में है, टू फुल रेड कैंडल। आई डोंट ट्रेड दिस पेयर मच, एक्सेप्ट इसको इस्तेमाल करता हूं, जैसे यूरो USD बनाया, GBP USD बनाया, बाय GBP सेल USD INR करके, तो उसमें USD INR का इस्तेमाल है। So let me come to the next one, that is the USD INR done, और एक पेयर जो मस्त प्रॉफिट दे रहा है, इसमें मेरा एक एग्जिट हुआ था कल, yesterday, अगर जो भी फॉलो कर रहे होंगे, यू मस्ट हैव सीन इन द मॉर्निंग अ रेड कैप,
तो यहाँ पे ये अपना टारगेट इनिशियल लेवल रीच हुआ, तो एंड उसके बाद रेड कैप्स नेचुरल होके बाई स्क्वायर्ड ऑफ सम ऑफ द प्रॉफिट, एंड later on I got another, as I exited I placed alerts as I do. Later on I got an entry chance once more in euro yen, and I did enter, and I'm holding the position once again 125 correcting, and it is that level, so I'll give it a serious thought, but this level is under challenge. Euro yen, let's see euro yen how it goes. Now once again, if a red cap in daily comes, then I will observe, मैं क्लोजली वॉच करूंगा तब जाके कि 125 मिनट में रेड कैप्स आने से आई विल नॉट एग्जिट. आई नीड अ शो ऑफ रेड कैप्स जैसे कल हुआ था, शो ऑफ रेड कैप्स हियर. सो नेक्स्ट जो ट्रेड आई थिंक और भी बढ़िया जा रहा है, 190 बोल बोल के जा रहा है, तो 190 के ऊपर गया था. टुडे नाउ वी आर सीइंग अ करेक्शन, 191 क्रॉस हो गया था. सो मार्जिनली डाउन, इफ यू ब्रिंग द कैंडल वो विजुअलाइज होगा, बट अभी तक एक भी रेड कैप्स नहीं दिख रहा है. रेड कैप्स दिखने पे देन प्रोबेबली आई विल गो टू 125 और आई विल टेक पार्शियल सम मनी होम, एंड होम के बाद आई विल गो टू 125 मिनट्स, और 125 मिनट्स में आई विल प्लेस एन एंट्री, बिकॉज मेरा आउटलुक क्लियर है कि मैं बाई करना चाहता हूं. दिस इज अ मेजर वार्निंग जिसका मैं नोट ले रहा हूं कि पॉसिबली अगर एक फुल रेड कैंडल यहां पे आ जाए तो डेली में यहाँ पे रेड कैप्स आ जाएगा, एंड दैट विल बी अ गुड पॉइंट फॉर मी टू एग्जिट 50% ऑफ माय क्वांटिटी एंड सी फर्दर हाउ इट गोज. इसके साथ हम लोग आ रहे हैं कि XAU USD में इट इज, हम लोग दिखाए थे कि इट गिव बाय कैंडल, बट इट इज विद इन वेरी मच विद इन अ रेंज. ये लेवल अभी तक तोड़ नहीं पाया, तोड़ा भी तो भी ये लेवल है. सो gold is still within a range. I'll avoid gold right now. XAG USD, which is silver international, did not give much of a sell. full red candle नहीं है, sell signal नहीं दिया था, but अपना जो silver है MCX silver, because INR strong, it has given a breakdown signal and it is about to reach the target level around 66,640. So और भी गिर सकता है. Further decline is possible. I am not taking part into this one because international से उतना confirmation नहीं आ रहा है. This is more of a silver week, obviously silver week, but also INR strength is playing a part here. So I'm so far I have not taken any position. The stop loss is also nearby, not too much of a run for a positional big player, but it's still in the short term. I think there are some opportunities left and it can drop further. तो मैं एक बार कंसिडर करूंगा आज क्या सिल्वर में मुझे फोमो क्वांटिटी छोड़ के जाना चाहिए या नहीं, बट गोल्ड एटलीस्ट फॉर नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड. एंड ये और एक रीजन है जो मैं सिल्वर में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पा रहा हूं कि gold is not really bearish. Gold and silver recently have been going to a bit of opposite direction. So this is kind of directions are very complicated and confusing. So इसमें छोटा position या no position करना ही बेहतर होता है, which is good for risk management, which is primary goal of primary focus should be for a trader. Risk management is the primary focus. इट्स एक्चुअली रिस्क एक्सपोजर मैनेजमेंट. तो अब हम लोग चले जाएंगे कॉमोडिटीज में. कॉमोडिटीज में यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज का हम लोग बात किए थे, जिंक, इट इज ग्रोइंग, अपॉर्चुनिटी ग्रो हो रहा है. 125 मिनट्स इज आवर टाइम फ्रेम, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम. इट इज कल फोमो एंट्री था, उसके बाद रेड कैप. सिंस इट्स फोमो आई डिड नॉट एग्जिट. आई यूजुअली कीप द मैक्स स्टॉप फॉर फोमो. मैक्स स्टॉप ऊपर गया है, बट सॉरी, दिस इज जिंक 2. आई हैव टू सी. जिंक 1 का एक्सपायरी बहुत आसपास होगा. तो टुडे आई एम गेटिंग अ फुल ग्रीन कैंडल, मतलब री एंट्री का. अगर 125 मिनट्स में ये क्लोज हुआ, मैं आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड, सो इसमें फ्रेश एंट्री आई विल वेट. अभी तक उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्ट्रगल है जिंक में थोड़ा, एंड देयर आर लेवल्स व्हिच आर नॉट क्लियर्ड येट.
So 215.5 के ऊपर I want more sustenance in the during the European hours. Then likely we can see further upside in the zinc. फिर हम लोग आ जाएंगे कॉपर। कॉपर में हम लोग देखे थे लास्ट जो वीकेंड एनालिसिस, इट वाज बियरिश, इट हैज रीच द फर्स्ट एम्प्टी लाइन टारगेट। लाइकली द नेक्स्ट टारगेट इज, एक ये है सपोर्ट जिसके पास ये रुका है, डबल कैंडल, डबल बॉटम, और very likely it will touch this. So copper is not very bullish. We are seeing a correction. So correction मतलब जो sell हम लोग किए थे, this is a partial exit chance. So partially exit the position and alert डाल दीजिए। Alt A, price action bearish, फिर से position डालने के लिए, to keep add more position you place this alert। फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम तो रेंज में है, इसमें कुछ खास कुछ नहीं हो रहा है, इट इज वेरी मच स्टक विद इन अ रेंज। छोटा रेड कैंडल, छोटा ग्रीन कैंडल, सो इट इज बेस्ट विल बी टू अवॉइड एल्यूमिनियम राइट नाउ। दूसरा जो ट्रेड के बारे में बात किए थे, क्रूड ऑयल मेरा एग्जिट देने के बाद वापस आया। हम लोग एग्जिट के बात किए थे बट इट केम बैक आफ्टर दैट, बट आई एम नॉट एंटर्ड एनी पोजिशन, आई एम वेटिंग। ये जो लेवल है, ये देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ है, ये लेवल के बाद आई विल प्रेफर टू एंटर मोर क्वांटिटी ऑन द बाई साइड। और अभी इमीडिएटली सेल का सोच नहीं रहे क्रूड ऑयल में। यहाँ पे फॉरवर्ड कर्व इज नॉट रियली वेरी बियरिश, मतलब बियरिश उतना है नहीं। फॉरवर्ड कर्व से मैं क्यों थोड़ा बहुत लेता हूं, इट हैज अंडरगॉन अ करेक्शन, ये रहा करेक्शन हुआ है, बट फॉरवर्ड कर्व एकदम बियरिश नहीं है। So it is difficult to immediately for me go into the bearish side. Rainbow का setup भी अगर देखें तो it is also not bearish. ये एक break का attempt था, strong resistance, ये resistance के ऊपर buy करना, $79 दे देखिए मेरा अलर्ट लगाया हुआ है। आफ्टर दैट ये मेरा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होगा, या फिर सेल के साइड मोर सिग्नल आए कॉन्विंसिंग, तब जाके अपना एक टारगेट हो सकता है 74.9 या फिर 73.9। बट करंटली वी आर नोवेयर, तो आई विल नॉट प्रेफर टू, ये जो एग्जिट आ गया था विद मार्जिनल लॉस, आई विल प्रेफर टू स्टे दैट वे। फिर और एक मौका जो कल मेरा सेशन था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, एक मौका दे सकता था ये नेचुरल गैस। बट नेचुरल गैस में कल हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, जस्ट अ मोमेंट सॉरी, ये अपडेट नहीं हो रहा है, चार्ट एडजस्ट होना चाहिए था, समथिंग इज रॉन्ग। Let me apply it once again. SD Rainbow version 1, commodity, apply. Anyway, हो गया, ये हो गया अप्लाई। तो यहाँ पे कल मेरा एक सेशन था, उसमें नेचुरल गैस में इंडिया में जो ट्रेड हम लोग देख रहे थे, देयर वाज अ पॉसिबल बाई अपॉर्चुनिटी एक नेचुरल गैस में बन रहा था, जो आई थिंक मेरा नेट थोड़ा ट्रबल कर रहा है, इसीलिए ये इमीडिएटली अपडेट नहीं हो रहा है, टाइम ले रहा है, ये कैलकुलेशन टाइम्ड आउट हो रहा है बार बार। एक बार मैं फिर से और एक बार अलर्ट लगा देता हूं, ये आ गया। सो कल जब हमारा लाइव सेशन चल रहा था शाम को, वी वर सीइंग नेचुरल गैस वाज मेकिंग अ ब्रेकआउट अटेम्प्ट, तो उसमें कैंडल साइज बड़ा था। एंड दोज हु अटेंडेड, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड, आई हैव टोल्ड, जो बात किए थे हम लोग कि आई विल प्रेफर टू वेट टिल क्लोजिंग, कैसे जाता है ये कैंडल का ब्रेक, अगर क्लोजिंग तक सब ठीक है देन इट विल बी अ वेरी गुड टू गो, देन इट कैन गो सिग्निफिकेंटली अप। और ये लाइव एग्जांपल है आज
क्यों क्लोजिंग तक वेट करना बेहतर होता है? क्लोजिंग तक वेट करने से हम लोगों को पता चल गया नेचुरल गैस कुड नॉट सस्टेन द ब्रेक, और डेली चार्ट में जो कैंडल है दैट वाज बियरिश, देयर वाज नो पॉइंट देन टेकिंग द नेचुरल गैस कॉन्ट्रा ट्रेड। सो 125 मिनट्स में ये बाय सिग्नल फेल होने के बाद there could be a new opportunity towards the sell side। डेली चार्ट में तो री-एंट्री का जो मिनिमम सिग्नल वाज दैट वाज फुल रेड वाज देयर, बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम साथ नहीं है। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम साथ नहीं है, और 125 मिनट्स जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है मेरा नेचुरल गैस के लिए, सो नेचुरल गैस 125 मिनट्स इज स्टिल नॉट फुल ब्लोन सेल। So nothing we can do much except for waiting out further to see what happens. Once we get a full red candle जिसके लिए आप alert डाल सकते हो price action bearish, then only I'll think about do any kind of trades. तो ये रहे मेरे ट्रेड आइडियाज का डिस्कशन। आई होप इस डिस्कशन से आपको हेल्प हो रहा है, एंड अगर हेल्प हो रहा है डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टू समराइज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो दिख रहा है मोर ऑन द यूरो, INR, GBP INR, GPN उतना नहीं, यूरो USD, GBP USD, ये साइड बुलिश अपॉर्चुनिटीज है। यूरो येन, पाउंड येन कंटिन्यूएशन गेम है। JPY INR में एक स्क्वायर ऑफ का अपॉर्चुनिटीज है ब्यूटीफुल सेल के बाद। गोल्ड सिल्वर इज काइंड ऑफ अ मिक्स सिचुएशन। सिल्वर में अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन द इंडियन साइड। जिंक कैन बी एन अपॉर्चुनिटी ऑन द बाय साइड। कॉपर कैन बी अ री-एंट्री अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन, क्योंकि जो हमारा टारगेट था, इनिशियल टारगेट, कॉपर हैज रीच्ड। Crude oil can be a bullish or bearish opportunity. Currently, it's a mixed situation. Natural gas can be a new bearish opportunity. तो we have summarized जो हम लोग डिस्कस किए। So I hope आपका ट्रेड इससे बेहतर होगा। All the best from my side and happy trading.